अगर आप जो है SD-WAN के components की बात करोगे, like what components we require when we talk about the SD-WAN. So one component that you required in the SD-WAN is the controllers, and the second component that you require in the SD-WAN is the edge devices. ऑलमोस्ट सारे के सारे मतलब जो आपके SD-WAN वेंडर्स हैं सभी में आपका यही कॉन्सेप्ट रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब हम सिस्को SD-WAN विप्टेला की बात करते हैं तो विप्टेला SD-WAN था पहले, ठीक है। सिस्को ने विप्टेला को एक्वायर किया, विप्टेला वाज अ कंपनी, सिस्को एक्वायर्ड विप्टेला, सो नाउअडेज इट इज सिस्को SD-WAN विप्टेला, ठीक है। तो सिस्को SD-WAN विप्टेला, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिस्को SD-WAN और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट विप्टेला SD-WAN, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। विप्टेला की अगर आप बात करोगे ना तो इनमें इनकी जो भी डिवाइसेस थी, मतलब जो भी ये भी राउटर बनाते थे, क्योंकि अगर आप बात करोगे ये जो एज डिवाइसेस में राउटर ही होते हैं, एज डिवाइसेस में राउटर्स ही आते हैं। सो सिस्को से पहले, बिफोर द सिस्को एक्वायर्ड विप्टेला SD-WAN जो आपके पास था, विप्टेला SD-WAN जो आपके पास था, वो विप्टेला SD-WAन में आपकी जो एज डिवाइसेस थी, जो आपके पास राउटर्स थी, ओके, सो इनमें ना विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सिस्को इन द विप्टेला SD-WAN, मतलब ट्रेडिशनली। बाद में जब सिस्को ने एक्वायर किया तो सिस्को ने एक्वायर करने के बाद भी जो विप्टेला डिवाइसेस हैं, इन विप्टेला डिवाइसेस में आज भी विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके पास आता है। Okay, so the question is key benefits of the SD-WAN. Key benefits of the SD-WAN is that we will have a centralized point of control on all the WAN edge devices deployed in variety of sites. Okay, from the centralized controller. वहीं से बैठ के आप मतलब centralized controller से बैठ के ही आप जो भी आपको मैनेजमेंट करना है, राउटिंग करनी है, whatever things you want to do, you can do it from the centralized controllers. You don't have to go onto the edge devices one by one. ठीक है, that will not be required anymore. जो कि ट्रेडिशनल WAN में आपकी एक रिक्वायरमेंट है। So SD-WAN में जब आप एज डिवाइसेस की बात करोगे, so there will be some routers, और SD-WAN में जब आप जो है कंट्रोलर्स की बात करोगे, so there are 3 controllers. SD-WAN में 3 कंट्रोलर्स आते हैं। एक होता है आपका vManage, एक होता है आपका vSmart, एक होगा आपके पास vBond। So we don't need to log into a particular device. Log in the sense कि just in case if you need to log into a particular device, you can log in from the centralized controller as well. You don't have to physically go to the device to do some sort of deployment or troubleshooting. That can be done remotely as well. So वो उसके लिए आपको log in करना पड़ेगा obviously. If you want to check the status or you want to check some routing or some some things on a particular local device, तो obviously आपको login करना पड़ेगा. For the login, you can also refer to the centralized controller for the same. Can ZTP be example of the? No. ZTP is not an example of the SD-WAN. In fact, ZTP is a process. Okay, वो अभी हम discuss करेंगे. ZTP is a process that is in fact used to deploy these edge devices automatically. ZTP stands for, एक क्वेश्चन ये है कि can ZTP be example of the SD-WAN? So ZTP stands for zero touch provisioning. ZTP stands for zero touch provisioning. ये आपकी एक फैसिलिटी है SD-WAN फैब्रिक में, जिसको यूज करके क्या होता है कि आप अपना ना एक एज डिवाइस लो, एक राउटर लो, उस राउटर को साइट पे लेके जाओ और साइट पे जाके आप इस राउटर को बस इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दो एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑन टू दैट राउटर. वो अपने आप ही ऑन बोर्ड हो जाएगा आपके मतलब आपके SD-WAN में. दैट विल बी ऑटोमेटिकली ऑन बोर्डेड. सो जीरो टच प्रोविजनिंग इज अ प्रोसेस in the SD-WAN by which an edge device like router can be onboarded in the SD-WAN fabric automatically with मतलब अब zero touch provisioning मतलब zero touch का मतलब अब देखो configuration आपको ना के बराबर करनी पड़ेगी. That's what we talk about in ZTP. ZTP is part of this course but not practically. ZTP is something like that we have to discuss how ZTP process works. But for ZTP, we have to provision a few things on the cloud itself, so that is not going to be part practically. But yeah, it is part in theoretical way. It is part how the process will work. What is vBond? vBond is like VB stands for vBond.
So one controller is named as vManage, one controller is named as vSmart, one controller is named as vBond. So vManage, vSmart, and vBond, these are the name of the controllers that we have in the Cisco SD-WAN fabric, and V stands for viptela. V का जो मतलब है ना, this stands for viptela. विप्टेला वी मैनेज मतलब विप्टेला मैनेज, विप्टेला स्मार्ट, विप्टेला मतलब उन्होंने जो जो कंट्रोलर्स बनाए उसके नाम उन्होंने विप्टेला मैनेज, विप्टेला स्मार्ट और विप्टेला बॉन्ड किए था. Now, in the edge devices, we have two types of devices. एक मतलब एक तो वो edge devices जो कौन बनाता था, आपका विप्टेला बनाता था, जिनको हम कहते थे VS devices. और जब बाद में सिस्को ने एक्वायर कर लिया तो सिस्को के जो ट्रेडिशनल राउटर्स होते हैं ना, सिस्को के जो ट्रेडिशनल राउटर्स होते हैं जिनमें आपका ना जैसे IUS XC पड़ा होता है, ठीक है. तो IUS अगर आपको याद हो तो सिस्को में जो इंटरनेट नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका IUS XC, IUS XR ये सब चीजें होती हैं, नॉर्मल IUS. सो IUS XC की जो भी डिवाइसेस हैं, मतलब जिन भी आपकी सीरीज में आपको IUS XC मिलता है ना, ASR, CSR, ISR सीरीज के कुछ राउटर्स हैं, ISR 4000 आई बिलीव, ASR, हाँ. तो ISR, ASR और CSR सीरीज के कुछ राउटर्स जिनमें आपका ना IUS XC मिलता है. तो अब क्या है कि सिस्को वालों ने ना अपने इस IUS XC कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस लायक बनाया कि भाई वो आपका SD-WAN सपोर्ट कर सके. सो सिस्को की भी क्या आती हैं, एस डिवाइसेस आती हैं, जिनको हम कहते हैं CS डिवाइसेस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस डिवाइसेस दैट यू विल फेस. ISR 43, हाँ ISR 43 में आप ISR 43 ISR 4 के सीरीज में है, ISR 4 के सीरीज में आपको ये SD-WAN का वो मिल जाएगा, SD-WAN कोड मिल जाता है. तो यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द सॉफ्टवेयर इमेज फ्रॉम द सिस्को सॉफ्टवेयर पोर्टल, डाउनलोड करके SD-WAN इमेज डाउनलोड करके अपने राउटर पे इंस्टॉल करो, एंड देन यू हैव टू यूज अ फ्यू कमांड्स एंड योर ट्रेडिशनल IUS XC router will now be ready to be onboarded in the SD-WAN. तो V और C, विप्टेला एज और सिस्को एज, मतलब ये दो एज डिवाइसेस हैं जो आपकी टिपिकली यूटिलाइज की जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एज डिवाइसेस स्पेसिफिकली. तो कंट्रोलर्स में vSmart, vManage, vBond, vSmart, vManage, vBond. और अगर आप एज डिवाइसेस में बात करोगे तो यू नो वी हैव लाइक vEdge and cEdge. Prerequisites. We'll talk about that. We'll talk about prerequisite. I will tell you in the last 15 minutes. You have to buy the, yes, we have to buy the licenses. The thing is that when we want to enable the capabilities of the IUS, मतलब ये SD-WAN, so you have to of course buy the licenses, and the licenses you will get with the name of DNA center, मतलब DNA license ही आपको purchase करना पड़ता है, and that comes in either 3, 5 or 7 years subscription. वो मतलब ऐसे भी नहीं आता, 1-2 साल का लाइसेंस है. So you have to basically purchase the license for the same, and then you can just like in the firewall licenses वगैरह आप इंस्टॉल करोगे तब जाके फैसिलिटीज आपकी पूरी प्रॉपर रन करती हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर एज वेल. ऑफ कोर्स यू नीड द लाइसेंसेस एंड द कॉस्टिंग विल बी देयर फॉर द सेम. सो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ये दो चीजें हैं, एक तो आपके पास कंट्रोलर्स और एक आपके पास एज डिवाइसेस. सो कंट्रोलर्स में आपके पास vSmart, vManage and vBond, and in the edge devices we have CS devices or the VS devices. Now let's talk about them one by one. आपको एक brief idea लग जाएगा कि what exactly is the advantage of having the SD-WAN in the network. एक आप एक ट्रेडिशनल, अगर आप एक राउटर की किसी भी ट्रेडिशनल डिवाइस की बात कर लो, ठीक है, यू टॉक अबाउट अ राउटर, यू टॉक अबाउट अ स्विच, एक फायरवॉल, किसी भी आप एक ट्रेडिशनल डिवाइस की बात कर लो. Since we are talking about the WAN technology, I will specifically focus on a router. So let's talk about a router. एक राउटर की फंक्शनलिटीज को अगर आप डिवाइड करोगे, मतलब जैसे राउटर का मेन काम तो राउटिंग करना है, टू राउट अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अदर नेटवर्क. बट अगर आप एक कंपोनेंट वाइज, अगर आप आर्किटेक्चर वाइज अगर आप इस राउटर को डिवाइड करोगे, सो आर्किटेक्चर वाइज देयर आर थ्री architectural planes in this router or switch or whatever device we have. One
is what we call, if ये पता होगा आपको वैसे तो, one is what we call the control plane, one is what we call the data plane or forwarding plane, and one is what we call the management plane. आइडियली आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, राउटर, स्विचेस या जो भी है, आइडियली उनमें आपको ये 3 प्लेन्स देखने को मिलते हैं. These architectural planes handle different functionalities of the device. There are some functionalities handled by the control plane of the device, some functionalities handled by the data plane of the device, some functionalities handled by the management plane of the device. So the control plane, data plane and management plane, ये तीन architectural planes हैं जो आपके typical एक router में देखने को मिलते हैं. switches में मिलते हैं. So if we have 3 routers, आप खुद सोचो, if we have 3 routers, there are 3 routers और more than 3 राउटर, doesn't matter. हर एक राउटर का खुद का कंट्रोल प्लेन है, हर एक राउटर का खुद का डेटा प्लेन है, और हर एक राउटर का खुद का क्या है, मैनेजमेंट प्लेन. सो व्हाट वी कैन से दैट एवरी राउटर हैज इट्स ओन कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन. सो एज ऑफ नाउ ऑल दीज 3 थिंग्स आर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड. सोच के देखो चाहे तो, the control plane, the data plane and the management plane is distributed. मतलब every device has its own set of control plane, data plane and management plane. Now, what is management plane? If we talk in brief a little bit about the management plane is basically responsible to see or to deal with like how the device is being managed. मतलब device आपकी कैसे manage की जा रही है. How the device is being managed. Is the device being managed using the console? If the device is being managed using the auxiliary, or the device is being remotely accessed via SSH, Telnet, or you are using some sort of SNMP SNMP protocol and those things to manage the device. So management plane is responsible to see how the device is being managed. You know, configuration करनी है तो पहले उसका access लेना पड़ेगा. You have to do the configuration of this device. You have to take the console of this device, and to take the console of this device, either you can open the console line, auxiliary line, remote access, or you can use some sort of SNMP or other protocols. Acha, then you're done configuring this device. Then what? Now you want to configure this device, so you have to console into this particular device again using either remote access, auxiliary, console, or whatever. So since we have distributed management plane, if you want to manage a device, you have to console into the device and then you will do the management task. ठीक? So management plane deals with the device management. उसका नाम ही management plane deals with the device management. Now what about the data plane? Data plane deals with like how the data is being forwarded. Data plane deals with the things like, you know, encapsulation, decapsulation. पैकेट रिसीव हुआ, रिसीव होके क्या करना, डिकैप्सुलेट करना, एरर्स वगैरह चेक करना. देन वंस द पैकेट इज डिकैप्सुलेटेड, चेक करना कि पैकेट को कौन से एप्रोप्रिएट इंटरफेस पे प्लेस करना है. देन यहाँ पे क्या करना, जब पैकेट यहाँ पे प्लेस किया जाएगा तो उसको इनकैप्सुलेट करना. सो डेटा प्लेन हैंडल्स थिंग्स लाइक डिकैप्सुलेशन, मतलब डेटा फॉरवर्डिंग. Your data is actually forwarded from the data plane. Data forwarding की responsibility आपके data plane की होती है. Typically what you say like you know, anything that goes through the device, मतलब कोई भी पैकेट आपकी जो डिवाइस से पास होके जाता है, that basically passes from the data plane. मतलब passes through the device in most of the cases. ये मत सोचना कि हमेशा ऐसे ही होगा. There are still a lot of things जिनमें आपके CPU को इन्वॉल्व किया ही जाएगा, but ideally you can say if any packet that goes through the device, that packet is not for the device itself, the packet is going through the device. For example, अगर मैं यहाँ से यहाँ पिंग कराता हूँ, the packet will be generated onto this device. The packet is destined to this device and the packet is going through this particular device. So what we will say that the packet is passing through the data plane of the particular device. So every device has its own set of data plane as well. Data plane में ना वो अगर आपको याद हो तो राउटिंग टेबल होती है, डेटा वो अगर आपको थोड़ी सी सेफ के बारे में पता हो, so forwarding information base, ठीक है, adjacency table, route cache, a lot of things are there. So in short, routing table is consulted, not generated.
routing table is consulted. Routing table is not routing table, what we say, like forwarding information base, the fib table. If you are talking about technologies like SAP, route cache, if you're talking about technologies like fast switching. So things like forwarding information base is consulted at the data plane to decide where the packet has to be moved from one interface to the other interface. मतलब एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पैकेट को प्लेस करना है, तो exactly what information has to be added when encapsulating the packet again. After decapsulation, it will come to know what is the destination IP and all. So all those things are part of the data plane. Decapsulate the packet when received, consult the tables to decide where to place the packet, and then place the packet onto the appropriate exit interface and perform the encapsulation. All those things are done at the data plane. अब ये भी हर एक डिवाइस का अलग अलग होगा, मतलब every device has its own set of data plane. और रही बात आपके कंट्रोल प्लेन की, CPU, मतलब कंट्रोल प्लेन टिपिकली controls the data plane. Control plane controls the data plane. Control plane is the place where in fact your routing table, ARP cache, these things are populated. मतलब ये routing table बनती कहाँ पे? Control plane पे. ARP table बनती कहाँ पे? आपके control plane पे. So like STP के BPDUs आपके exchange हो रहे हैं between two switches, ठीक है. OSPF के hello messages exchange हो रहे हैं between two routers. So those messages are basically exchanged from router 1 to router 2. उसके बेसिस पे आपकी routing table update हो रही है. ARP cache में ping आपने कराया, ठीक है. तो उस केस में आपके neighbor का MAC address ARP cache उसके accordingly बन गई. So control plane actually controls the data plane. Control plane पे आपकी routing table, control plane पे आपकी ARP cache, STP के messages, BPDUs, VTP, मतलब whatever control plane protocols all those things are basically handled by the control plane. जब आप कहते हो OSPF के messages exchange हो रहे हैं, so router 1 will generate an OSPF message, it will give to the router number 2, router number 2 will receive it and it will give it to the CPU. CPU उसको क्या करेगा, check करेगा, अच्छा ये route है इसमें, तो it will install that route in the routing table. Control plane भी distributed है सभी का. Every router has its own set of control plane. तो route exchange करना है, so this router has its own set of routing table. It is also having its own set of routing table, or protocols like OSPF, BGP, RIP-I, GRP, whatever. They will carry the routing updates. They will carry the routes in the routing updates to the other router, and the routing table will be updated accordingly. ये traditional architecture. मतलब ऐसा नहीं कि SD-WAN में ये नहीं है, SD-WAN में भी ऐसा ही कुछ है. We still have the control plane, we still have the data plane, we still have the management plane, but not like this. इस तरीके से नहीं है. We still have the control plane, we still have the data plane, we still have the management plane, but not in a distributed fashion. ऐसा नहीं कि हर एक डिवाइस का खुद का क्या है, control plane, data plane and the management plane. So control plane, anything that goes towards the device, मतलब जो भी data device के लिए ही होगा, that is what we say, that is going towards the control plane of the device. So control plane मतलब any traffic, any data, any packet that goes towards the device, मतलब जो device के लिए ही है, goes to the device, that is what we say, it will be handled by the control plane. Any data, any packet that goes through the device, that is what we say, it will be handled by the data plane. And management plane is just to manage the device using console, auxiliary, VTY, whatever. Now, अगर आप SD-WAN की बात करोगे, if you talk about SD-WAN from this context, तो SD-WAN में मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास कंट्रोलर्स और एक आपके पास है टेस्ट डिवाइसेस. देखो कंट्रोलर्स में मैंने आपको 3 कंट्रोलर्स बताए. मैंने आपको बताया एक vManage, एक मैंने आपको बताया vSmart और एक मैंने आपको बताया vBond. तो
your vManage controller is nothing but the management plane of the SD-WAN fabric. एक centralized management plane. We have a centralized management plane in the SD-WAN fabric for all the edge devices. सभी की सभी edge devices का एक centralized management करने के लिए आपके SD-WAN fabric में एक controller दिया गया. उस controller को कहा गया vManage. vManage is the centralized management plane of your SD-WAN fabric. Okay. vSmart. vSmart is the centralized control plane of your SD-WAN fabric. अगर आप vSmart की बात करोगे तो vSmart is the centralized control plane of the SD-WAN fabric. मतलब ideally we used to have a dedicated control plane on every edge device. हर एक राउटर पे आपका खुद का कंट्रोल प्लेन होता था, but in the SD-WAN fabric that's not going to happen. In the SD-WAN fabric there is something called vSmart controller which acts as the control plane of the device. And the bond, vBond. The vBond is going to be the nothing. vBond is not the data plane. Don't get confused about the vBond. vBond is not the data plane, so forget about vBond for a moment. Now we talk about the data plane. We talk about data forwarding. Of course, data forwarding will be done by the edge devices. So vBond is not the data plane. What is the data plane? We'll talk about that. What is the data plane? Data plane is in fact your edge devices, your CS devices or the VS devices. आपकी जो CS devices हैं, जो आपकी VS devices हैं, these devices are in fact the data plane devices. मतलब आप ये सोचो, आप ये समझो कि जो आपके हर एक राउटर पे जो आपका उनका मतलब वो डेटा प्लेन भी था उसी में, मैनेजमेंट प्लेन भी था उसी में, कंट्रोल प्लेन भी था उसी में. Now those edge devices are called the data plane devices because they only have the data plane. अच्छा, मैनेजमेंट प्लेन भी होता है. मैनेजमेंट प्लेन का मतलब हम उनमें कंसोल लगा के अभी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव द कंट्रोल प्लेन. मतलब ये जो VH और CS डिवाइसेस है ना, इनको आप आपस में कनेक्ट कर देना. मान लो सपोज आपने दो VH डिवाइसेस ली, दो विप्टेला की एस डिवाइसेस ली, ठीक है, इनको आपने ना कनेक्ट कर दिया और जरा राउटिंग चला के देखना कि नेबरशिप बनती है कि नहीं बनती है. और मतलब जब कभी करोगे तब देखना. So point is that these edge devices are just known as the data plane devices. They do not have the control plane in it. Control plane in पे नहीं होता है. So until they are connected with the control plane, until these edge devices are connected to the controller, the vSmart controller, which is in fact the control plane, which will act as the control plane of these devices, these are useless. इनका कोई काम नहीं. Data forwarding, it will be the responsibility of the edge devices to forward the data from one point to the other point over the transport, like maybe internet or something like that. But when we talk about the route exchange process, जब हम बात करते हैं कि VS device अपना route exchange करेगा to the other VS device, that is not going to happen like traditionally it used to happen. ऐसा नहीं होगा कि आपने VH1 पे OSPF चलाया, यहाँ पे OSPF चलाया और नेबरशिप बनेगी और आपस में राउट एक्सचेंज हो जाएगा. It's not going to happen. We are doing routing, yes, we are doing routing on the edge devices, but the concept is that the neighborship and those things are not going to happen like they used to be. Data plane devices or the edge devices, they still need to maintain the routes. क्योंकि अगर उनके पास राउट ही नहीं होगा, so they will not be able to forward the data. So of course, to have the route, to advertise those routes to the other edge devices, we need routing. तो routing तो करवानी पड़ेगी, no doubt. But route exchange करना है from one VS device to other VS device, that will not happen directly. That will happen via centralized vSmart controller. मतलब
एक vS डिवाइस अपने सारे के सारे राउट किसको देगी, vSmart को, and vSmart will give those route information to the other vS devices, into the other sites, into the other data center and all. It will not happen like directly कि भाई आपने as to as a route exchange करा दी है. You can typically consider it as a अगर आप में से किसी ने BGP पढ़ा हुआ होगा, you can typically consider this as a route reflector. Now, as devices, they do not exchange the route with each other. So this vSmart controller typically acts as a route reflector. Just in case if you are aware with the BGP, you must have heard this term called route reflector. What exactly is a BGP route reflector? What exactly is the BGP route reflector? It is a device. It is a router. If a router is configured as the route reflector, it will be responsible to receive the route from one router and to give it to the other router. Specifically in case of what? IBGP. So in the same way, when we have connected two S devices, like two VS devices, we have connected vEdge1, VS2 over the public transport such as maybe internet. What we can do, what we have to do, in fact, what we have to do, we have to have this vSmart controller somewhere in the cloud, somewhere in the data center. We have to have the reachability from the S device to the smart controller, from the S device to the smart controller, and these S devices, they will hand over their route to the smart controller, and smart controller is going to give it to the other S device, just like a BGP route reflector would do. So the smart controller, the vSmart controller, the control plane of the device is responsible to perform all the control plane functions. जो भी control plane functions हैं जो भी आपके those will be done by the vSmart controller. मतलब these S devices they will run some sort of protocol. अब वो है तो वो भी device ही, तो they will run some sort of protocol. They will run some sort of protocol, you know, and they will give their route to the smart controller. Then the smart controller is going to give that route to the other S devices. And to manage every S device from a centralized point, we have the management plane. We have this vManage. To manage every device from a centralized point, we have this vManage. From that centralized, इसको हम कहते हैं NMS, Network Management Station. We call that NMS. इसको हम Network Management Station कहते हैं. So this Network Management Station, it is what we use to manage all these S devices from a centralized point. Well, once your devices are added, once your S devices are added in the SD-WAN fabric, in the SD-WAN, you don't need to log into those devices like by going to the sites. You can log in to those devices from the centralized NMS, Network Management Station. That is what we call vManage in our case. It's called vManage. I will show you how the vManage looks like. It is a GUI based, you know, it gives you a GUI based access of every aspect of the VS devices. We also do on the VS devices, not going to go, no, it's not like that. We can still do the management from the, you know, on the local device. We can still do the you know, management from the local devices, but you know, if we want, we can do it from the centralized controller itself, so it doesn't matter. We have not talked about any lab or practicals as of now. We are just talking about the fundamentals. Two-way, what do we mean by two-way? You want to do from the vSmart, vEdge and from the vManage as well? See, the thing is that if your S device, if you have registered your S device into vManage, you have आपकी जो S devices हैं, for these S devices, you have attached these S devices in the vManage, then you will not be able to do any sort of changes onto these S devices locally. You have to do whatever you want to do from the centralized vManage. ये मतलब एक condition है. This is one condition कि भाई अगर आपकी if you have added these S devices in the vManage, अगर आपने इन S devices को अपने
vManage पे ऐड किया हुआ है, then all the verification you can do locally, ping you can do locally, trace you can do locally, but you will not be able to do any sort of configuration changes locally on these edge devices. vManage is just and just required for the management. No, you cannot do that. You cannot do that forcefully as well. What you have to disconnect. You have to disconnect your edge device from the vManage, then you can do the configurations locally. But as soon as you attach the device again to the vManage will send the configurations to those edge devices, and those configurations sent by the vManage will override whatever configuration you have done locally. So vManage is the centralized management plane, vSmart is the centralized control plane, and if we talk about the vEdge devices, these are the actual edge devices. These are the actual edge devices that we actually have onto our sites, जो हम अपनी sites पे attach करते हैं. We attach these edge devices onto our sites, and to manage these edge devices onto the sites, we have a centralized controller called vManage. For these edge devices, now they are just the data plane devices. They will just be responsible to forward the data. So their control plane is somewhere like what we call the vSmart. The control plane of these edge devices is what we call the vSmart. The vSmart controller, it acts as the centralized control plane for all these edge devices in the fabric. Now what is vBond? We'll talk about that. But we have a centralized management plane, we have a centralized control plane, and we have a distributed data plane. Data plane अभी भी हर एक device का अपना खुद का है. In fact, those routers, those edge devices are in fact known as the data plane devices. इनको data plane devices ही कहा जाता है. Now now what is the use case of the vBond? Let's talk about the use case of the vBond. Let's talk about the use case of the vBond first, and then I will show you an architecture like how this thing is going to happen in front. So if you talk about the vBond, what exactly is the vBond? vBond is what we call a vBond orchestrator. What we call vBond, we call vBond as vBond orchestrator. vBond orchestrator is in fact responsible to securely bring up the SD-WAN fabric into the network. मतलब आपके SD-WAN fabric को एक secure way में up and running लेके आने के लिए we have a centralized controller for the same. That is what we call vBond, and more like we call it vBond orchestrator. So what happens in fact from the architectural point of view, so ये initial bring up के लिए use किया जाता है. What we can say, this is used for the initial bring up. मतलब आपकी जो SD-WAN fabric, जब आपके controllers और जब आपकी edge devices up आती हैं, so they reach out to the vBond first of all, and then the vBond basically आपका edge devices को बताता है कि कौन vManage है, कौन vSmart है. So just remember that vBond is used in the initial bring up process. vBond आपका initial bring up process के लिए use किया जाता है. After that it has no use. उसके बाद इसका कोई काम नहीं है. मतलब देखो, whenever any edge device or controller will come online, it will contact the vBond, and then vBond will be responsible to add it into the SD-WAN fabric in a secure way. And once the device has been added in the SD-WAN fabric in a secure way, that vBond has no use cases whatsoever. So अब कोई नई डिवाइस आएगी तब उसको ऐड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके vBond की है, but other than that vBond has no other significance in the SD-WAN fabric other than just to add the device into the SD-WAN fabric. मतलब एक डिवाइस को, एक VS डिवाइस को, एक कंट्रोलर को आपके फैब्रिक में सिक्योरली ब्रिंग अप करके लेके आने के लिए आपके vBond रिस्पॉन्सिबल है. That's it. Now let me give you a from architectural point of view, let me tell you a few things, then आपको थोड़ा better clear होगा. तो देखो, let's say we have a data center
इन आवर डेटा सेंटर वी हैव डिप्लॉयड आवर कंट्रोलर्स. डेटा सेंटर में हमने अपने कंट्रोलर्स को होस्ट कर रखा है. इन आवर डेटा सेंटर वी हैव आवर vSmart कंट्रोलर, vManage एंड द vBond. ये तीनों ही हमारे डेटा सेंटर में होस्टेड हैं एंड दीज आर कनेक्टेड. ये एक राउटर है, ठीक है. These controllers, this vSmart controller, this the vManage and this the vBond orchestrator, these are connected maybe via internet transport, या internet transport या maybe via private transport such as MPLS. मैंने अभी भी कहा आपसे, you can still have the MPLS connection. It's not like your SD-WAN is going to replace the MPLS. And they are connected with the sites. ये आपकी ना ये sites हैं. ये आपकी let's say site 1 है. Site 1 पे आपकी एक VS device लगी हुई है. दोनों ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड है. मतलब दिस साइट वन इज इन फैक्ट कनेक्टेड विद बोथ द ट्रांसपोर्ट्स लाइक इंटरनेट एंड एमपीएलएस. देयर इज अ साइट 2. इस साइट 2 पे आपके पास क्या है, आपने हाई अवेलेबिलिटी के लिए एक VH भी लगा रखा है और आपने एक CH भी लगा रखा है. मतलब यू कैन हैव मल्टीपल एज डिवाइसेस, यू कैन हैव मल्टीपल एज डिवाइसेस. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. यू कैन हैव मल्टीपल एज डिवाइसेस ऑन टू योर साइट if you want to have some sort of high availability, high redundancy, आप ऐसा रखना चाहते हो, so that can be done. तो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है. और एक जो हमारी साइट है ना, इस साइट पे मतलब एक हमारे पास साइट नंबर 3 पे ऑलरेडी एक सिस्को की एज डिवाइस लगी हुई थी, तो उसको अपग्रेड कर दिया गया है कि भाई SD-WAN सपोर्ट करने के लिए उसको अपग्रेड किया गया है. तो ये यहाँ पे ऐसे हो सकता है एक ही ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हो. इट डजंट मैटर. देखो रीच कनेक्शंस, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि कनेक्शंस आपने कैसे करा रखे हैं, फुली रिडंडेंट या कैसे. ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव अ टिपिकल राउटर. हमारे पास एक नॉर्मल iOS राउटर है, ठीक है, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है मे बी इंटरनेट से. इसको मैं इधर रखता हूँ. मे बी वी कैन हैव अ साइट, और इस साइट पे हमारा एक टिपिकल राउटर है, ठीक है. इस राउटर को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है. एंड बिहाइंड दिस राउटर वी हैव अवर एज डिवाइसेस लाइक वी हैव द VS डिवाइस और द CS डिवाइस बिहाइंड द राउटर. ऐसा भी हो सकता है. डिप्लॉयमेंट आपके ऊपर है, कि हाउ यू हैव क्रिएटेड योर टोपोलॉजी एंड हाउ यू हैव कनेक्टेड दीज एज डिवाइसेस टू द कंट्रोलर्स ओवर द ट्रांसपोर्ट्स लाइक, इनको हम ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं, ओवर द ट्रांसपोर्ट्स लाइक इंटरनेट और द MPLS. So we have the controllers in our data center, vSmart controller, vManage, vBond. We have our controllers in the data center. We have our S devices deployed onto the sites. Site 1 पे VS device, Site 2 पे VS devices, Site 3 पे VS devices, Site 4 पे VS devices, or we can have a mix of both like vEdge and CH, or we can have like only CH. CH मतलब Cisco की S devices, vEdge मतलब Viptela की S devices. दोनों compatible हैं एक दूसरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता. Or we can have these devices deployed behind the router as well. Maybe हम यहाँ पे some sort of NAT वगैरह perform करेंगे. I don't want to replace my existing router, so I just have added this vEdge or CH behind the router itself. ऐसा भी हो सकता है. Now, considering कि आपकी reachability है, considering कि this reachability is completely there, considering कि ये reachability आपकी पूरी है, considering you have the reachability from this point to this point and every point automatically, आपने मतलब IP configure किया हुआ है, and you have done the configurations, you have done whatever configurations are required, and there is a full reachability from the S device to S device and S devices to the controller. Considering that thing, in our lab we will do that manually, but considering here that we have the reachability to the controllers and to the other sites, what will happen? Whenever this S device comes online, जब भी S device आपकी आप आती है, this S device will in fact reach out to the vBond. याद रखना, we have to do some sort of configurations on the S devices. If we are not talking about ZTP, हम इसकी बात नहीं कर रहे. We have to do some sort of configurations on the S devices, and about the controllers, we do not tell this S device or these S devices about all the controller. We just tell these S devices. We just tell these S devices about the vBond. हम केवल इनको vBond के बारे में बताते हैं. We don't tell it. हम इसको नहीं बताते किसके बारे में, अपने
vSmart या vManage के बारे में. We will tell this vS device who is the vBond. We will tell these S devices who is the vBond. हम इनको भी बताएंगे कि vBond कौन है. I will tell every S device who is the vBond. In fact, हम इसको भी बताएंगे और इसको भी बताएंगे कि vBond कौन है. याद रखना, vBond orchestrator. vBond orchestrator is the first point of contact for every device in the SD-WAN fabric. So every S device must know, or every controller must know, who is the vBond. तो अगर आप कंट्रोलर साइड की बात करोगे तो जब आपने vSmart को बता दिया, vManage को बता दिया, vBond के बारे में, when we already told like vSmart, vManage about the vBond, then what will happen? The vBond will automatically get aware कि भाई vSmart कौन है. मान लो 100.1.1.1 है और vManage कौन है. उल्टा कर देते हैं. होता क्या है कि whenever controllers come online, जब भी controllers online आते हैं, vSmart knows about the vBond, vManage knows about the vBond. मतलब vSmart को भी पता है कि vBond कौन है, vManage को भी पता है vBond कौन है. So in fact they reach out to the vBond. वो vBond तक reach out करते हैं. They reach out to the vBond. They establish some sort of connection. जैसे वो TCP connection नहीं होता, जैसे TCP connection आपका build-up होकर रखता है. In the same way, these vSmart, these vManage, they establish some sort of connection to the vBond. They establish some sort of tunnel. They establish some sort of tunnel to the vBond. अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे कभी. It could be a DTLS tunnel or the TLS tunnel, which is SSL based tunnels, जैसे TCP वगैरह आपके पास होता है. तो vSmart, vManage, they reach out to the vBond and they establish some sort of tunnels, some sort of connection to the vBond. जैसे TCP कनेक्शन बनता है, जैसे BGP आप दो राउटर पे रन कराओ तो दोनों राउटर के बीच में पहले एक TCP कनेक्शन बनेगा. In the same way, when the smart controller, vManage and the vBond, when they are aware of each other, they will establish some sort of tunnels, some sort of DTLS or TLS tunnel, which we will discuss later on in the classes. So vSmart, vManage, they reach out to the vBond, they establish some sort of tunnel. vBond gets aware, vBond को पता लग जाता है कि vManage कौन है. Obviously जब reach out करेंगे तो अपना IP लेकर तो जाएंगे. और vSmart कौन है. vBond knows about the vSmart, vBond knows about the vManage. मतलब vBond को पता है कि vSmart कौन है और vBond को पता है कि vManage कौन है. Now when this device comes online, this device only has the data plane. इसके पास control plane है ही नहीं. So what this device is going to do, as soon as this device comes online, this device is configured with the information about the vBond. So this device will try to reach to the vBond. वो device आपके vBond तक reach करेगी. यहाँ पे कुछ initial authentication perform होता है. Some sort of authentication will be performed. कुछ authentication perform किया जाएगा, कुछ चीजें क्रॉस चेक की जाएंगी, कुछ चीजें वेरीफाई की जाती हैं. ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह यूटिलाइज किए जाते हैं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, वो सब चीजें आपकी आगे आपको कवर अप कराई जाएंगी. सो सम सॉर्ट ऑफ इनिशियल ऑथेंटिकेशन विल बी परफॉर्म एंड वंस दैट ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, जब वो इनिशियल ऑथेंटिकेशन आपके vEdge और vBond के बीच में सक्सेसफुल हुआ, मींस व्हाटएवर थिंग्स हैव टू मैच, दे आर मैचिंग. जब वो ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेसफुल हुआ, दिस vBond will give this vS device information about the vSmart and the vManage. मतलब ये vEdge को बता देगा vBond कि अच्छा आपके लिए vManage कौन है और आपके लिए vSmart कौन है. And now this S device will automatically establish the connection to the vSmart and to the vManage. तो इसके पास इसका कंट्रोल प्लेन भी आ गया और इसके पास इसका मैनेजमेंट प्लेन भी आ गया. और डेटा प्लेन वो खुद ही था. डेटा प्लेन ये रहा आपका मैनेजमेंट, ये रहा कंट्रोल प्लेन और ये रहा आपका मैनेजमेंट प्लेन. सेम विल हैपन इन फैक्ट फॉर एनी एस डिवाइस. सेम विल हैपन इन फैक्ट फॉर एनी एस डिवाइस. किसी भी एस डिवाइस के लिए यही होगा. व्हेनेवर द एस डिवाइस कम्स ऑनलाइन,
The S device will reach out to the vBond because that is the only information that we have configured. It will some sort of initial authentication will take place between the vEdge and the vBond, and once that authentication gets successful, that particular vS device will be given the information about the vManage and the vSmart controller of the SD-WAN fabric, and then it will have the connection from the management plane and from the control plane automatically. Same thing will happen on all the S devices. अब इतने में ही आपका 3 यूनिट्स आपके SD-WAN कंटेंट की खत्म हो जाती हैं. पहला आर्किटेक्चर वाला, सेकंड में कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट और थर्ड में राउटर डिप्लॉयमेंट. इतने में ही, मतलब ये इतना इजी नहीं जितना आपको दिख रहा है. We have to do the connectivity certificates and all those things we have to do, and after we have done all those things, you will see कि आपकी S devices आपके fabric में add हो जाएंगे. And then you can just take the access, you can take the GUI access of the vManage and you can manage all these S devices, controllers, everything locally from that particular vManage. Locally nahi, centrally from that particular vManage. This is the whole point of having the SD-WAN. अब आप बताओ इसमें एम्प्लेस कैसे खत्म हुआ? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं. ये तो हो गया क्या मैनेजमेंट के बारे में कि भाई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट विल बी डन फ्रॉम द vManage. ये हो गया आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल प्लेन के बारे में कि नाउ व्हाटएवर राउट इंफॉर्मेशन